So this one looks like a good opportunity. We just hit the 1/2 एंगल, इसके ऊपर क्लोजिंग दिए, इसके ऊपर 1/3 एंगल के ऊपर भी मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे रहे हैं. And there is a continuous movement in this overall price. जहाँ पर अगर हम लोग वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं, और अभी तक यहाँ पर जो पोटेंशियल आना चाहिए था वो आया नहीं. ओके, पोटेंशियल इन द सेंस कि एक्चुअली में बाइंग वॉल्यूम यहाँ पर आया नहीं है. वी आर अर्ली, हम लोग अर्ली में एंटर कर रहे हैं, जस्ट टू एंटर विद अ स्मॉल रिस्क. So now, if you calculate this overall scenario, तो WD Gann के अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज जो हमने ऑप्शन प्राइस पे चूज़ किए हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर 44. तो नंबर 44 के लेवल को अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो कल मार्केट इसी लेवल पर बंद हुआ था, और आज इसी लेवल के जो गैप थे उसके ऊपर मार्केट ओपन. टुडे इज द 15 ऑफ सितंबर. ओपन होने के बाद इस गैप को फिल कर दिया मार्केट. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी इन दिस प्राइस एक्शन. यहाँ पर गैप को फिल करने के लिए मार्केट आए, गैप को फिल किए, थोड़े नीचे की तरफ आए, मार्केट फॉर्म्ड अ हायर लो फॉर्मेशन. तो मार्केट जब भी गैप को फिल करने के बाद हायर लो फॉर्मेशन करते हैं, एंड अगर वो हायर लो एक गैन नंबर के नीचे लोअर पोर्शंस हो और मार्केट अगर ऊपर की दिशा में रेजिस्टेंसेस को ब्रेक कर रहा है, तो इट इज अ इंडिकेशन दैट मार्केट इज नाउ सेट फॉर अ फर्दर अपसाइड. वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन. सभी देखो 46 का यहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है. नाउ व्हाट कुड बी द पॉसिबल टारगेट if I have to choose this? So this is the 1/1 angle, this is the 1/1 angle. So if I found the target, तो मुझे टारगेट मिलना चाहिए यहाँ पर 49.8 पे. 49.8 पे जो फर्स्ट टारगेट है वो मिलना चाहिए. सेकेंड टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट एट द 54.65. सो ओवरऑल 2/1 के ऊपर मार्केट के अगर क्लोजिंग हो रहे हैं इस मोमेंट पर, तो उस मोमेंट के ऊपर हमें एक्सेलरेशन मूव देखने को मिलेगा. अलॉन्ग विद दैट, दिस इज द प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑफ द मार्केट, जहां पर अगर इस पॉइंट पर बिना रुके द मार्केट गॉन एंड द अपवर्ड साइड, तो वहां पर वी विल जस्ट have to hold our position with patience, and we will see that market यहाँ से कितने ऊपर की तरफ जा सकते. So let's see what is going to happen at this particular moment, and we can easily see also there is another potential of the movement is there. यहाँ पर there is a mother candle form. Mother candle के low market ने break किए थे. So this is the failure breakout. तो failure breakout हुआ. Failure breakout के बाद opposite direction पे जब market close हो रहे हैं, so in that moment we can see the market might give the percentage of this moment. मतलब यहाँ पर जितने भी रेंज बने हैं 10% का रेंज, तो अपसाइड में अगेन 10% का रेंज जो है वो आने तय होता है, जो कि ऑलमोस्ट 52 के आसपास प्राइस इन हो रहे हैं. तो ऑलमोस्ट हम लोग 54 का रेंज आज एक्सपेक्ट करेंगे. यहाँ पर कल के जो भी मूवमेंट है, इट वॉज अनदर लेवल ऑफ द मूवमेंट, 60% ऑफ द इंट्राडे प्रॉफिट, एंड टुडे वी आर होपिंग फॉर दिस 15%. तो 15% आज हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट होने वाला. Alright, so let's see what is going to happen at this particular moment, and let me just pause the video right here and we will continue this. Alright, तो यहाँ पर देखो हाई बने हैं 49 पर. हमारा 1/618 का जो टारगेट है वो है 49.8. ठीक है, तो दिस इज वायर we always expect this kind of profitability from option, and that's so with the scalping. Today is the 5th day. So far I did not get much response in this comment section. I will continue this for another week, and again, if I don't get the needed attention from the learners, I will stop this session after the next week. So let's see
where it is going as of now. 49.8 is the first target. We are now in the 49.4, 49.3 high. Let's see. Already the market ने जो angle angle है उसको break कर दिए हैं, 2/1 break कर दिए हैं, and also it break the 1/4. So we are expecting this movement to, और वॉल्यूम भी आना स्टार्ट हो गया है. इफ यू सी द एवरेज वॉल्यूम जितने भी थे लास्ट इस पार्ट पर, वो वॉल्यूम से ऊपर है अभी. जो मदर कैंडल के हाई थे उसको भी ब्रेक कर दिए हैं. सो वी कैन एक्सपेक्ट इट टू राइज. सो अगेन आई एम पॉजिंग द वीडियो राइट हियर ऑन 49.4. और अगर ऐसा हो जाए कि 49.8 आ जाए, आई विल क्लोज द entire video from recording. 49.1 to 9.45, 8 का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं. Let's say I'm pausing again. Okay, so the 50 is now achieved in the market. और यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे, this is the potential bullish engulfing pattern form over here, followed up by the inside bar formation. So this is a very fantastic bullish pattern we are able to find. Also the volume is continuously increasing from this particular level. Or this is what 52 the level achieved so far, and 54 पे आएगा तो हम लोग वीडियो को क्लोज कर देंगे. ठीक है, 53, 54.25, 54.5. चलो, we are able to achieve our potential target. 54.5 का हाई बने हैं, 54.65 का है यहाँ पर. ठीक है, तो वो भी ऑलमोस्ट आ जाएगा. So I hope you got some good learning from this particular scenario, and I will get back to you in my next video and try to just give me some kind of review, or I can say I need the review to just make improvement in my teaching sessions. So that's it as of now from my end today, and I will get back. Bye.